यशोदा जीवना हे श्री दामोदर हे श्री माधवा यशोदा जीवन तुलसीयव्रजा चारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शीलातृणात्मुले सिद्धतीतिना कलिलतं मना कांत गच्छति श्रीनंद नंदना यशोदा जीवना हे दामोदर हे शिमा दुआ। तो कल हम लोग जो है गोपियों की हृदय की बता सुन रहे थे, कैसे गोपी बता रही हो, नाथ you always give us pain. First you give us direct pain, and if you're not satisfied with that, you give pain to yourself. And when you're giving pain to yourself, तो क्या हो रहा है कि we get more anxiety, we get more separation from you, we have more pain to see your pain or to see in you in pain. तो गोपियां अलग अलग तथ्य दे रही हैं। तुमने कहा भगवान के चरणों की ऐसी क्या खास बात है कि गोपियां जो है इतना कंसर्न है भगवान के चरणों को लेके, तो उसको लेके कल हम लोगों ने एक बड़ा डिटेल डिस्कशन किया कि भगवान की जो लोटस फीट है उसमें जो लोटस मार्किंग्स है, उन मार्किंग्स का क्या क्या सिग्निफिकेंस है। चलो एक क्विक क्वेश्चन है कि कृष्ण के पैरों में कितने मार्किंग है, दोनों पैरों में मिला के? 16 प्रभु जी। कितनी? 16? 16। 16। अच्छा, वेरी गुड। कलावती माता जी? कलावती 18। हाँ, एक में कम है, एक में थोड़ा ज्यादा है। 9 और 11 से like that। यार माता जी कल ही तो बताया। हाँ, 7 और 9 तो फिर भी 16 होता है। नहीं, 7 9 नहीं है, दोबारा सोचो। शर्म आनी चाहिए वैसे। गूगल कर रहा है, कौन कौन गूगल कर रहा है? हाँ जी, गूगल कौन कौन कर रहा है? क्या कर रहे हैं? गूगल। क्या पूछा प्रभु जी? नहीं, मुझे तो नहीं आता है ऐसे ये करना। चरणों में कितने मार्किंग है? क्या? टोटल कितने सिंबल है भगवान के चरणों में? ओके, चरणों में 19। अरे हाँ, मैं 18 बोलने वाला था। 19 है, 19 राइट। एक पे 11 है और एक में 8 है। अच्छा। राइट राइट राइट। फुट में 11 है हम्म। और लेफ्ट फुट में 8 सिंबल है। और तुम यार लोटस फीट में कैसे मनन करोगे जो तुम्हें यही नहीं याद कि कितने उनमें वो है? इतने भी क्या नालायक हो गए तुम लोग। थोड़ा सा अपने दिमाग को यहाँ रखो भाई। एक एक चीज का सिग्निफिकेंस था, एक एक चीज का सिग्निफिकेंस। अच्छा बताओ मुझे कि अंकुश का क्या सिग्निफिकेंस था? हरे कृष्णा प्रभु जी, बताऊं? अंकुश का? हाँ, अंकुश अंकुश जो है। अंकुश लगाना, हाँ, मतलब अंकुश लगाना, जैसे जो एक महावत है वो इतने बड़े हाथी को उससे मतलब जो उसके जो कान के पीछे से उसको अंकुश, मतलब उसके जो उसको कंट्रोल कर लेता है, ऐसे ही जो हमारी जो इंद्रियां उसके ऊपर अंकुश लगाना, मतलब वेरी गुड, शुक्र है कुछ तो याद है।
हाँ, ऐसी बात नहीं है। और अंत्यकोण का मतलब क्या हुआ? क्या प्रभु जी? 8 कोण जो थे, अंत्यकोण। ये 8 डायरेक्शन से प्रोटेक्शन देता है हम जीवात्मा को, ये है। वेरी गुड। और मत्स्य, क्या सिग्निफिकेंस था? प्रभु जी जैसे जल के बिना वो था ना वेरी गुड रीना, प्राउड ऑफ यू। कल एक्चुअली मेरे मेट्रो में ना नेट बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, तो मुझे पूरा सेशन कल ढंग से पता भी नहीं चला, तो थोड़ी बहुत चीजें थी वो मुझे मतलब बहुत ज्यादा ठीक से समझ भी नहीं आई, बट ये वाला टाइम पे शायद मैं मेट्रो से निकल गई थी तभी मुझे याद है। ठीक है, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट कि मेरी जितनी हाँ वीडियो जी। जितनी है ना क्लास, ये हम्म। क्लास मॉर्निंग में जाते समय सुन सकती है तो, क्योंकि इसकी इसकी ओके। ऑनलाइन वीडियो आ जाती है। अच्छा ठीक हाँ, है। ठीक है, यूट्यूब में ना ठीक सेव है हो रहा है सारा। ठीक है ठीक है वेरी ठीक है। नाइस। हाँ तो जी। फिर भगवान के चरण है ना, चरणों की कितनी महत्ता है। कल सोम्या गोली मारी थी, तो सोम्या फेल हो गई आज। सोम्या को कल पकड़ेंगे। एनीवेज। प्रभु जी। So Krishna keh rahe, do not be anxious about my feet. Just forget about any discomfort you think I may be feeling. But the gopis reply, but you are our beloved. We cannot stop thinking about it. If a husband or a beloved does not return from a place at the expected time, his dear friend, wife or sweetheart cannot help but worry that some calamity has occurred and she may not see him again. She becomes very distressed, only to find out later that all is well. Similarly, the gopis expresses their mood. You are our beloved. So we are bound to feel like that. If our heart felt no love for you, we would not feel any pain. Our attachment for you is the root of all our sorrow. But at the same time, it is our natural tendency. So Gopi's words are perfectly true. It is only because of the attachment that one feels sorrow and pain. They continue, our attachment for you is the guilty party. We know that we should have no love and affection for you. But the fact is that we do not have it. So what shall we do? Because कृष्ण के अलावा उनके जीवन में कुछ था ही नहीं भाई. Now our earnest prayers to you is that you please remove this attachment from our heart. अब now they're praying to Krishna कि please हमको डिटैच कर दो अपने आप से. Krishna may retort, it is our mind and heart. It is your mind and heart. You can cut it out yourself. I am not responsible for your mind and heart. To this, the gopis reply, our attachment to you is not our fault. It is yours. Because you are our beloved and you are so astonishingly attractive. If you were not so affectionate and attractive, we would have no love for you and everything would be all right. But you have made yourself so beautiful and such a charming lover that our mind have left us and gone to you. Why have you done that? You alone can remove our attachment because you are now in possession of our mind and heart. If you want to please us, do not roam the forest. Come and stay with us. That is the remedy. In each of the verses of Gopi Gita, the Gopi pray, please appear before us. In the previous verse, they uttered the word Dhyanam Mangalam. The word Dhyan generally means meditation. But in the case of the gopis, it simply means that they are remembering Krishna. The gopis' remembrance is not like a yogi's meditation. When they remember Krishna, they forget everything else. Whatever they are doing, whether it is walking, talking, or cooking, they are always immersed in Sahaj Samadhi, a natural deep absorption in Sri Krishna. देखो योगी से बड़ी ही गोपियां हैं. योगी को सब कुछ छोड़ना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है भगवान में ध्यान लगाने के लिए.
लेकिन इन लोगों का काम क्या है? बर्तन धो रही है, बर्तन धोते धोते धोते, अरे मुझे जरा कटोरा दियो, अरे जरा कढ़ाई दियो, अरे जरा खाना दियो, अरे जरा गोपाल दियो। क्या मांग रही है भाई? अरे गलती हो गई, दही बेचने जानी, दूध ले लो, दही ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, माधव ले लो, अरे घी ले लो, माखन ले लो, लस्सी ले लो, गोविंद ले लो, गोपाल ले लो, माधव ले लो। उनकी हर एक एक्टिविटी जो बता दो ना, चलो सखी तहां जाइए, जहां मिले ब्रजराज, चल सखी वहां चलते हैं जहां पे ब्रजराज मिले। गोरस बेचत हरी मिले, एक पंथ दुई काज। गोरस भी बिक जाएगा और हरी भी मिल जाएंगे, एक साथ दोनों काम हो जाएंगे। सो द वर्ड सहज, सहजायते मीन्स टू कम naturally from birth. So their full absorption, the full absorption in anything related to Krishna comes automatically and naturally. Srila Vyasdev had to make some efforts to practice Bhakti Yoga, and in this way he achieved Samadhi. The Gopis, on the other hand, do not require to practice sadhana bhakti because their heart are steeped in a prema that is situated in the higher stage of Mahabhav. They never come out of samadhi. They simply go deeper and deeper into it. अगर इंद्र को किसी की भी समाधि तोड़नी है, वो मेनका को भेजेगा या उर्वशी को भेजेगा, या फिर वो क्या करेगा, कामदेव को भेजेगा। यहाँ पर इन गोपियों की अगर समाधि तोड़नी है कृष्ण के एब्जॉर्प्शन को लेके, तो अगर वो क्यूपिड को भेजेगा भी तो क्यूपिड को कृष्ण नजर आएंगे, ठीक है ना। सो उनका तो ये है गोपियों का कि उनका कोई राक्षस भी आएगा मारने के लिए, अरे कृष्ण कन्हैया को ब्लॉक नहीं आगे बचाएगा हमको। So they never come out of their samadhi. They simply go deeper and deeper into it. And their samadhi deepens when they see Krishna, and it further deepens and thickens as they remember him when he is out of sight. Some people are puzzled by this. They wonder which is actually higher, meeting with Krishna or being separated from him. We will understand these topics when we have gained some realization of them. And for now, we can pray to the gopis as Srila Vishnath, Chhatrapati Thakur Pad, and Ruji Goswami have prayed. Neither Brahma nor anyone else can explain these topics without your mercy. O gopis, one can understand them by only your grace alone. गोपिर भतुर पद कमले और दास दासानुदासा। जब तक ये पोजीशन नहीं आएगी ना कि हम गोपियों के दास के दासों के दास हैं और हमारा जीवन का लक्ष्य और केवल गोपियों के चरणों को ही धारण करना है, जिसमें सबसे उत्तम गोपी राधा रानी है, तब तक हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे। तो इफ द गोपी इज बेस्ट ऑफ देयर मर्सी अपॉन अस, we will become qualified to fully comprehend the true nature of their pastimes, which cannot be understood by intellectual analysis. Intellectually देखें ना यार, अरे मैरिड वुमेन किसी दूसरे मर्द के बारे में सोच रही है और ये जस्टिफाई किया जा रहा है भगवान की भक्ति में। लेकिन फिर अगर हम लोग इसको पूरे के पूरे किसी साधु का, शास्त्र का, अगर हम लोग किसी साधु का शरणागत होते हैं और साधु फिर हमको एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है कि जितनी भी गोपियां हैं, ये गोपियों की शादी कृष्ण से ही हुई थी जब ब्रह्म में मोहन लीला हुई थी। जितने भी उनके पति हैं वो कौन है? कृष्ण है। और उसके बाद जब उनके असली पति वापस आ गए तो उन्होंने कभी भी उनको योग माया के प्रभाव से अपनी पत्नी माना ही नहीं। वो जानते हैं कि हमारी पत्नी है, लेकिन कोई पत्नी वाला सुख नहीं है। जैसे उस दिन मैंने बताया कि कहीं पे भी आप ये दे सकते हैं कि ललिता का बच्चा हो रहा है या विशाखा के बच्चा हो रहा है, कुछ है नहीं। क्योंकि जो भगवान कृष्ण का उनके प्रति प्रेम था वो भी बिल्कुल प्योर था, वो बिल्कुल प्योर था। इट वाज नॉट विद एनी टिंच ऑफ व्हाट, कंटामिनेशन ऑफ लस्ट। So, if the gopis bestow their mercy upon us, we will become qualified to fully comprehend the true nature of the pastime, which cannot be understood by intellectual analysis. At present, we must hear these topics
so that we can develop a greed to perform Raganuga Bhakti. अगर हमने सुनेंगे ही नहीं तो हमारे अंदर ग्रीड ही पैदा नहीं होगी रागानुगा भक्ति। कोई पुराना नहीं है, कोई नया नहीं है भक्ति के अंदर। भक्ति के अंदर ये कोई नहीं कह सकता कि अरे यार देखो आए हुए 6 महीने हुए हैं। जितनी ग्रोथ मैंने अपने 2.5 साल पहले 5 साल के अंदर करी, और मुझे नहीं लगता कोई बंदा 20 साल में भी करता है, और मेरे को नहीं लगता कि उस 5 साल में मैंने ग्रोथ करी वो अगले 10 साल में मैं कर पाया। क्योंकि जो भी हमारी भक्ति के अंदर ग्रोथ होती है वो हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों से हो जाती है। और फिर जब हमारे वैष्णव अपराध बढ़ते हैं, हमारी अपराध करने की टेंडेंसी बढ़ती है, तो वो एक स्टैग्नेंट स्टेज पे आ जाती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भक्ति आगे बढ़ रही होती है, भक्ति में प्रोग्रेस हो रही होती है, हाँ, लेकिन हम लोगों को लगता नहीं। जैसे प्लेन होता है ना, प्लेन उड़ता तो है, प्लेन उड़ता तो है, हवा में जाता भी है, लेकिन जाते ही ऐसा लगता है कि जैसे प्लेन वहीं खड़ा हुआ है, तो होल्ड करना। तो तो बता रहे गुरुदेव कितनी बड़ी जबरदस्त बात बोली उन्होंने कि एट प्रेजेंट वी मस्ट हेयर दीज टॉपिक्स सो दैट वी कैन डेवलप अ ग्रीड टू परफॉर्म रागानुगा भक्ति। द फ्रूट्स ऑफ hearing these topics will be that eventually we will feel that we cannot live without hearing them. At that time the gopis will bestow their mercy upon us and we will be able to appreciate something of their unlimited glory. It is very simple. आप आज चाहे आपका नेचर कुछ भी सुनने का क्यों ना हो, आप हिंदी गाने सुनने शुरू कर दो पुराने जमाने के। अगर वो पुराने जमाने के मतलब पुराने जो 70s 60s के थे, थोड़े दिनों के अंदर यू विल डेवलप टेस्ट फॉर दैट। देन अगर इफ यू आर लिसनिंग टू द रॉक म्यूजिक ऑफ 60s और 70s, यू विल डेवलप ऑटोमेटिकली टेस्ट फॉर दैट। तो व्हाई आर यू डेवलपिंग अ टेस्ट फॉर दैट? बिकॉज यू आर कंटिन्यूअसली लिसनिंग टू इट। तो इस तरीके से अगर हम लोग ये कथा सुनेंगे, राग मार्ग की कथा सुनेंगे, तभी हमारे अंदर रति प्राप्त होगी। हमें रति मतलब अटैचमेंट टुवर्ड्स दीज टॉपिक्स। In one's practice of Vedic Bhakti, one performs the Arati ceremony to the deity of Krishna on the temple altar. Krishna has already Krishna already has, बोला दरवाजा बंद करो। Krishna already has articles that are million of times superior to any the aspiring devotee can offer. Yet, out of duty, the devotee offers him articles of worship. So he offers lamb, water in the conch shell, and the cloth, and then the cloth offer food stuff, but he has no feeling. The Vedic scripture states that even if one performs archana for million of birth, it is not certain that he will develop a taste for Raganuga Bhakti. However, if a person hears and discusses topics such as Gopi Gita in the association of a Vaishnava who is superior to him, he practices Bhakti under the guidance of the Vaishnava, it is certain that he will develop this taste and greed. Lolyam chahiye hame. This is made even more effective if we associate with the Vaishnava who is Rasik and Bhavuk and who has realized these topics. We cannot imagine the results of such association. In this way, we will understand the topic of meeting and separation. तब समझ में आएगा कि मीटिंग में और सेपरेशन में क्या फर्क है। अगर हम लोग मिलते हैं, किसी से मिलते हैं, तो हमारा यार ये बात बार बार कितनी बार बताई जाए, एक बार हम सुन चुके हैं इस बात को। जब हम मिलते हैं तो हम मिलते हैं, हम साथ में हैं, तो हमारा माइंड इधर जा सकता है। लेकिन अगर हम नहीं मिलते और वी आर इन सेपरेशन फ्रॉम दैट पर्सन, वी आर कॉन्टिन्यूअसली thinking about that person, and that is more intense than meeting. So the following pastimes reveals how there can be separation in the meeting. Once at Prem Sarovar की कहानी सब जानते हैं कि and the incident took place that impelled Shri Krishna to leave Vrindavan. Srimati Radhika was sitting on his lap, embraced by his arm and listening to his loving words. दोनों के दोनों बाहों में बाहें डाल के बैठे हुए थे. A bumblebee began to buzz close to her, and she became fearful. जैसे वो भौरा आया, रानी डर गई. Krishna's cowherd friend Madhumangal chased away the bee with his stick and returned, and he boasted
I have driven Madhusudan. I have driven Madhusudan away and he will never come back. मधुसूदन का मतलब बम्बल बी भी होता है, भगवान कृष्ण का नाम भी मधुसूदन है, but it is also the name of Krishna. तो जैसे ही राधा रानी ने सुना मधुसूदन कि वो कह रहा है कि मधुमंगल ने बोला कि कृष्णा चला गया है और he will never return, even though she was sitting on the lap of Krishna, she was immediately thrown into an ocean of painful feeling of separation. And she began to cry. Where is Krishna? Where is Krishna? Where is Krishna? उनकी एगोनी इतनी बन गई, इतनी बढ़ गई कि इतना हो गया कि she fainted. And this stage of love of a Krishna, feeling of separation in meeting with is called Prema Vaichitya. So Prem Sarovar is a very good example of Prem Vaichitya. Prem Vaichitya is experienced at the time of meeting, whereas Divyon, Madh and Chitta Jalpa मतलब बताता हूँ मैं, appear at the time of separation. So Divyon, Madh और Chitra Jalpa. So Vishwanath Thakur explained in his commentary on Brahma Gita that there are 10 divisions of divine madness. Divyon Madh 10 तरीके से होते हैं, which are experienced by 10 divisions of चित्र जल्पा, ठीक है, और वेरिजिनेटेड मैड इमोशनल स्पीच, ठीक है। इसके बारे में हम लोग जब भ्रमर गीत पढ़ेंगे तो मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा, और अगर आप चाहते हो तो मैं कल की क्लास से एक छोटी सी ले लेंगे, उसमें विल डिस्कस दैट। तो इन प्रेम वैचित्य, जब हम प्रेम वैचित्य की जो बुक पढ़ेंगे उसके अंदर हम लोग देख सकते हैं ऐसे। तो हैप्पीनेस एंड सॉरो आर बोथ फेल्ट at the time of meeting and also at the time of separation. In Prem Vaichitya, Radhika is externally with Krishna, but she feels internally that she is separated from him. और ये जो है painful है. And on the other hand, in Divyonmad and Chitra Jalpa, when she is externally separated from him, she thinks now I am with Krishna. Internally, she is fully meeting with him, and this gives joy to her heart. यहाँ पे समझ में आया क्या बोला उन्होंने कि प्रेम वैचित्य के अंदर राधा रानी एक्सटर्नली तो कृष्ण के साथ है, बट इंटरनली शी सेपरेटेड फ्रॉम हिम। लेकिन जो दिव्योन्माद और चित्र जल्पा है उसके अंदर राधा रानी क्या है, कृष्ण के से अलग होकर भी उनके साथ में है। So the Sri Krishna noticed Srimati Radhika's mood as her separation from meeting with him and thought Radhika and the gopis feel my presence when we are separated from each other. But sometimes they feel separation from me. When I am with them, at those times there is nothing I can do to help them. So Radhika and the gopis feel my presence when we are separated from each other, but sometimes they feel separation from me when I'm with them. At that time, there is nothing I can do to help them. Their feeling of separation while meeting bring them great distress. It would be best if I go far away so that they can meet me internally. And I should leave Vrindavan forever, for it is better that I feel pain so that they will have some happiness. So that was the main reason Krishna had to leave Vrindavan. So the gopis feel the same way about Krishna. As long as Krishna is pleased, it doesn't matter how much sorrow or pain we feel. They feel some consolation after Krishna has gone to Mathura and Dwarka, and they are in Vrindavan thinking Krishna is happy with his queens, his sons, and all his other associates, and he also feels joy in meeting with Kubja.
Let him be happy. We do not want to disturb him. Similarly, Krishna finds some consolation when he is in Mathura or Dwarka. The gopis are somewhat happy in their feeling of separation. I want their happiness. They achieve it in those moods and sentiments. If I were to remain in Vrindavan, it is possible that they would experience such separation from me, that they would die. These sublime sentiments are especially true of Radhika, who tastes the separation mood of Dirvanmad and Pralap. Her loving mood have been described in our Acharya's commentaries on Brahmar Gita. The reason the gopis do not die in the anguish of their separation from Krishna is that they think Krishna would be greatly distressed if we were to die. For this reason alone, we must remain alive. Likewise, Krishna thinks if I were to die, the gopis would feel undescribable pain. He and gopis wants nothing but each other's happiness. This is called pure love. We hear that Krishna left Vrindavan in order to kill Kamsa and to be with Vasudeva and Devaki. But these are only external reasons. The most essential and the prime reason was to please the gopis. Moreover, we must consider whether or not he really felt he really left Vrindavan. His going to Mathura and killing Kamsa is described in Srimad Bhagavatam, chapter 44 and chapter 45. Describes the subsequent event as follows. When Krishna Balaram left Vrindavan and went to Mathura with Akrura, Nanda Baba also went to Mathura. The day after they arrived, Krishna killed Kamsa. Kamsa's brother fought with Krishna and Balaram, and Balaram killed them all. Later that same day, Krishna reinstated Ugrasen as the king of Mathura in a grand celebration with offering of flowers and much opulent paraphernalia. Ugrasen had previously been king, but Kamsa had usurped his position. And after Kamsa's death, Krishna performed the Abhishek ceremony to again establish him as the king. After Ugrasen was reinstated, all the important members of the Yadu family, so Vasudev, Devaki, Ugrasen, and Akrura, had a long meeting in which they decided we must take great care of Krishna because now that he has killed Kamsa, he will try to return to Vrindavan. Nanda Baba is waiting in a garden on the outskirts of the city. We must do our best to ensure that Krishna and Balaram do not return with him to Vrindavan. We will impress upon them that they are sons of Vasudeva and Devaki, not Yashoda and Nanda. Accordingly, the members of the Yadu family were very affectionate to Krishna that day, and you are the son of Devaki and Vasudeva. They told him, and we are your relatives and family members. Do not think that Yashoda and Nanda are your mother and father, and do not think that your real home is Vrindavan. You actually belong to Mathura, and we are your natural relatives. Meanwhile, Nanda Baba was waiting for Krishna and Balaram in his camp outside Mathura. On the evening of the second day, when it had become dark, Krishna and Balaram approached him. They sat on his lap, one on each side. Why are you weeping? They asked him. But Nanda Baba could not utter a word in response. Understanding his mind, Krishna said, Baba, you are my father. So why are they saying that Devaki and Vasudeva are our mother and father? All the Mathura Vasis are trying to persuade us to accept this. During this conversation, Krishna and Balram, Baba discuss many related topics, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explained in his commentary that everyone oh my god.
Sorry. Vishwanath Thakur explained in this commentary that everyone wants to live in that place where they receive the most love and affection. Sorry. Krishna received so much love from Nanda and Yashoda, those prema is certainly far superior to that of Vasudev, Devaki, and all Mathuravasis. Why then did he stay in Mathura and not return with Nanda Baba to Braj? According to the rule of prema, he should have gone with him. But according to Srimad Bhagavatam, he did not do this. What is the Siddhant or conclusive philosophical truth in this connection? Vidya Chakravarti Thakur says that prema has two chambers. प्रेम के दो चैम्बर होते हैं. Prakosthas, the first is where the manifest pastime Prakat Leela are performed, and the second where is unmanifested what's good? Are performed, and the second where the unmanifested pastime, yani Aprakat Leela, takes place. In Prakat Leela, Krishna and Balram did not return to Vrindavan, whereas in the Prakat Leela, they returned. So Vrindavan Paritajya Padamekam Gachati. Krishna never set a foot outside of Vrindavan, not a single footstep. This statement refers to a Prakat Leela, in which he is always in Vrindavan. In a Prakat Leela, however, he sometimes leaves Vrindavan and sometimes he enters. Srila Vishwanath Thakur has explained that it would be opposed to Bhakti Rasa if in a Prakat Leela, Krishna was not always with those who love him the most. जैसे बताया गया कि तीन राधा रानी है, एक राधा रानी समयोगिनी, वियोगिनी और विश्वभानुनंदिनी. जैसे कृष्ण वृंदावन में थे, विश्वभानुनंदिनी was with कृष्णा, लेकिन जब कृष्ण छोड़ के चले गए तो समयोगिनी राधा was, वियोगिनी राधा was there, who was all the time feeling separation. But when they are feeling separation, तो जैसे हमने बताया कि साथ में रह के, प्रीतम के साथ में रह के प्रिया जी जो सेपरेशन फील कर रही है वो प्रेम वैचित्य है. ठीक है. और जो दूसरी बात हमने बोली कि लेकिन अगर वो दूर दूर है एक दूसरे से तो फिर जो उनके जो फीलिंग होती है उसके बारे में भगवद गीता में दिव्योन्माद के नाम से बताया गया है ना. तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इज द ब्यूटी ऑफ this whole topic, ki this separation is something which is all the time is not recommended. क्योंकि हम बोलते हैं ना कि यार ये इसके प्रेम में पागल हो गया. गोपियां तो बहुत बुरे तरीके से पागल थी कृष्ण के प्रेम में, तो वो क्यों नहीं चाहती थी कृष्ण हमेशा उनके साथ है. कृष्ण ऐसा क्यों नहीं सोचा कि मैं हमेशा वृंदावन में रहूं. तुमको लगता है कुछ लोग सोचते हैं कि जरासंध तो शिशुपाल से बचाने के लिए भगवान वृंदावन वापस नहीं गए. ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि कृष्ण के लिए क्या मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था. सेकंड लगते हैं उनको, सेकंड में ही कुड हैव डिस्ट्रॉयड जरासंध एंड शिशुपाल, बट नो, he did not do that. He was rather like a normal person running from one place to another and trying to protect everybody. तो हम देख सकते हैं इस तरीके से कि ये जो सेपरेशन है इज ऑलवेज बेटर देन द संभोग. जो संभोग में प्रिया प्रीतम जो है उनके बीच का जो भाव है वो ऐसा हो सकता है कि वो उस समय बैठ के किसी और मूवमेंट के बारे में सोच रहे हो या किसी और वस्तु में मनन कर रहे हो, लेकिन जब दे आर डिफरेंट, दे आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, then there is no boundary or there is no foundation among them, and then they're all the time thinking about each other. So we will just read the next verse day after tomorrow
Tomorrow I'm not sure whether I'll be free by the time. If I will get free, I'll let you know. By what time I'll get done with the ceremony, I have to do it Dehradun. So whatever discussion we had, we pray to Radhesham, Gauritai, Krishna Balaram, Srila Prabhupada, Srila Gurudev, Anant Koti Vaishnavi to bring the blessing and to always make us situated in our Swarup as a servant of Krishna. And with our mind, body, and words, let us serve the divine couple eternally and attain the goal of life. That is Radha Dasyam. Vancha Vesha, Kripa Sindhu Patitanam Pavanebhyo Vaishnav. वैष्णवेभ्यो नमः। ओम तो कोटि वैष्णव की जय।